Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'll be making the third part of chapter number 1 of class 11th, what is psychology. So let's get started. Before this video, in the last video we covered about the different perspectives of psychology, the evolution, how the psychology got its origin, how it, you know, was developed and its schools of psychology basically we did. That was structuralism, functionalism, behaviorism, gestalt psychology, psychoanalysis, humanistic perspective, cognitive perspective. Today we'll be starting with your new topic, that is branches of psychology. Now let's come to it. Various fields of specialization in psychology have emerged over the years, which have been comprehensively elucidated below. तो इसमें यही बोल रहा है वो कि साइकोलॉजी में भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर हो गई हैं, ठीक है। इतने सालों से रिसर्च हो रही है और नई नई फील्ड्स आई हैं, तो हम कुछ फील्ड्स के बारे में ब्रीफ में थोड़ा पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. So what comes under cognitive psychology? Let's take a look. It investigates mental processes. What? Obviously, we know the meaning of cognition. We know mental processes, logical thinking, all these things come under your cognition. So cognitive psychology, so it talks about your mental processes. It investigates the mental processes involved in the acquisition, storage, manipulation, and transformation of information received from the environment, along with its use and communication. कहाँ मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? आपकी स्टोरेज में, आपकी मैनिपुलेशन में, या आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में. इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट जो इससे रिलेटेड है, दैट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. और कॉग्निटिव प्रोसेसेस, मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं? जैसे अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So basically, we talk about all these things in cognitive psychology related to your mental processes. The very first is clear. Now, biological psychology. By the words biological, we understand that what is biological? That is natural. That is your biologically means like it focuses on the relationship between the behavior and physical system. ठीक है, जैसे आपके ब्रेन, आपका बाकी का नर्वस सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम, आपके जेनेटिक्स. बायोलॉजिकल में आपका ये आता है ना, जेनेटिक फैक्टर्स एंड ऑल. तो इससे रिलेटेड जो आपकी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका बिहेवियर और आपका फिजिकल सिस्टम, इन दोनों पे वो कॉन्सेंट्रेट करता है. ओके, इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मोर ओवर योर इम्यून सिस्टम एंड योर जेनेटिक्स, बायोलॉजिकली टू. क्लियर? With this, we did the very first two. Let's come on the next part, that is neuropsychology. Okay. Neuropsychology पे आते हैं. Psychologists and neuroscientists are working together and studying the role of neurotransmitters, which are responsible for neural communication in different areas of the brain and associated mental functions. Okay. What are they explaining is कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो रोल है, उसको साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट जो है, दे आर studying and they are saying that the role of these neurotransmitters is responsible for their neural communication in different areas of the brain. Yes. Next, what they saying is comprehensive research is carried out on people with a normal functioning of the brain and as well as on people with damaged brains by use of advanced and recent technologies. ठीक है, तो न्यूरोसाइकोलॉजी में आपका ये आता है कि देर आर रिसर्चेस विच आर डन, जिनके भी आपके इम्पेयरमेंट है ब्रेन में या डैमेज ब्रेन्स हैं, बाय रिसेंट टेक्नोलॉजीज जो इन न्यूरोसाइकोलॉजी के अंडर आती हैं, जैसे EEG, it can be PET, ECT. I'll be talking about them in the later parts also.
but you should know these are the technologies which are being used in order to improve the conditions of the damaged, impairment which has happened in somebody's, you know brain, and whatever damages are done in order to improve them we use these technologies. Next, developmental psychology. It studies the physical, social and psychological changes. Okay, आप जब डेवलप होते हो तो आप कैसे डेवलप होते हो? सिर्फ फिजिकली डेवलप नहीं होते, आप सोशली भी डेवलप होते हो, आप साइकोलॉजिकली भी चेंजेस आते हैं आपके अंदर. यस, दैट अकर्स एट डिफरेंट स्टेजेस एंड एजेस ऑफ अ लाइफ स्पैन, फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज. ओके, फिर आता है आपको सोशल साइकोलॉजी. And this branch of psychology explores how people are affected by their social environments. कि कैसे लोग अपनी सोसाइटी, अपने सोशल एनवायरनमेंट से जो है अफेक्ट होते हैं. हाउ पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड अबाउट अराउंड देम, हाउ दे ट्राई टू इम्पैक्ट पीपल अराउंड देम. And there are topics like pro-social behavior, your prejudice, attitude formation that are keen interest to social psychologists. In social psychology, we will all, I'll be making videos when I'll be covering, later all these things. Then I will be talking about them in brief. Next, cultural psychology. Okay. Lays emphasis on the role of culture. Yes. जो आपको देख रहे हो, आप जो नाम है उसी से पता चलता है कि क्या है. ठीक है. In attaining a deep understanding of human behavior, thought and emotion. ठीक है. Main assumption of cultural psychology is that human behavior is not only a reflection of human biological potential, but also a product of culture. आपका सब कुछ बायोलॉजिकली आपका बिहेवियर नहीं आई मीन दिखाता है, बट मोरओवर आपके कल्चर का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दैट इज कल्चर साइकोलॉजी. एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में आपका होता है कि कैसे फिजिकल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सारे के सारे जो है कैसे ह्यूमन बिहेवियर को जो है अफेक्ट करते हैं. ठीक है. एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ऑन हेल्थ, द इमोशनल स्टेट इज अंडरस्टूड इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. बेसिकली आपके फिजिकल अरेंजमेंट को आपकी हेल्थ से आई मीन रिलेट किया गया है. जस्ट अ सेकेंड. यस. देन कम्स योर हेल्थ साइकोलॉजी. जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, इन सब चीजों को जो है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना, उसको रिलेट करना अपनी मेंटल हेल्थ से, दैट कम्स योर इन हेल्थ साइकोलॉजी. कि उसको कैसे कोप अप करना है स्ट्रेस को, ऑल दीज थिंग्स. क्लिनिकल साइकोलॉजी में डील्स विद द कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन. ठीक है. बेसिकली आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, जो आपको डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हो आप, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया एंड ऑल, उन सब के बारे में आप पढ़ते हो, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, उनके प्रिवेंशन के बारे में. देन कम्स योर काउंसलिंग साइकोलॉजी, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ एंड टू इफेक्टिवली कोप अप विद चैलेंजिंग सिचुएशंस, ये सब आता है इसमें. ओके. इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के अंदर जो साइकोलॉजी होती है, जिसमें कि आपका मेनली हाउ टू डील विद द एम्प्लॉइज, all these things come under your industrial and organizational psychology. Educational psychology में आपका आता है कि you learn about different like, please read. It lays emphasis on understanding how people of all ages understand and learn things. ठीक है. कि कैसे लोग अपनी अलग अलग एज पे कैसे कैसे समझते हैं, चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं. दैट ऑल कम्स विद अंडर एजुकेशनल साइकोलॉजी. यस. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपके जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, आपके जो एथलीट्स होते हैं या जो भी होते हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, दैट कम्स अंडर योर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी.
Now, there are other emerging fields of psychology. ठीक है? अभी तो हमने ये सारी पढ़ी, but there are more which are coming. So psychology has always been of multidisciplinary nature, and because of this nature of psychology, yeah, multidisciplinary means different, very much different fields, multi fields. Okay. So these are the following: political हो गया आपका, aviation, space, forensic, military, community psychology, managerial psychology. Okay. And now you can see this picture. ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को हमने टू वे पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज प्योर एंड अप्लाइड. और इसके अंदर, प्योर के अंदर आती है आपकी जनरल, एब्नॉर्मल, सोशल, एक्सपेरिमेंटल, फिजियोलॉजिकल, पैरा एंड जियो. और अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर आता है आपका एजुकेशनल, क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, लीगल, मिलिट्री, पॉलिटिकल, क्रिमिनल. I'll be talking about these pure psychology and applied psychology difference in the next class. Till the time, I will be giving you questions. Okay, about it. हमने एक टॉपिक कवर किया है अभी, वो है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. तो मैं उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन दूंगी जो आपको याद करने हैं. Okay, the questions are: explain briefly about the different branches of psychology. Explain the different types of different branches of psychology. In which यही एक क्वेश्चन है for today, जिसमें कि आप ये सारी साइकोलॉजी को जो मैंने पढ़ाया है, you need to learn it. Afterwards, one more question: write down about the other emerging fields of psychology. This is a 2 or 3 marker question. You need to write all these points. Okay. Then after this question, you need to draw this diagram or picture in order to get good marks and more presentative. It will be look more good. Okay. So with this, today's lecture is over. You need to do your homework, right? Okay. So I'm just stop sharing it. Meet you guys in the next video. Thank you.